Hello, my dear amazing students. Welcome back to Silver Line Books by Turning Point Publishing House. This is your friend and educator, Achal, and I'm taking up My Green World for class 2. Right, we are on to chapter number 12, that is types of clothes. Right, किस type के clothes हम पहनते हैं, seasons के according कैसे हमारे कपड़े change होते हैं, how according to the occasions we dress ourselves up, and जो cloth होता है वो कहाँ से आता है, whether it comes from plants, animals, so all that we are going to learn about clothes in this chapter, right? So children, we wear different types of clothes depending on the weather of the place we live in and the kind of work we do. So जो हमारे कपड़े हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, जहाँ हम रहते हैं वहाँ गर्मी का मौसम है, सर्दी रहती है, उसके हिसाब से हम अपने कपड़े चूज करते हैं, राइट? एंड ऑल्सो द चॉइस ऑफ आवर क्लोथ्स डिपेंड ऑन दी प्लेस वी वर्क इन, जहाँ हम काम करते हैं, राइट? उसकी भी कंडीशंस, मतलब जहाँ अगर सपोज वी आर वर्किंग एट अ फायर स्टेशन तो हमें फायर फाइटर की यूनिफॉर्म पहननी होगी. सपोज वी आर वर्किंग एट अ हॉस्पिटल, यू आर अ नर्स, सो नर्स कैसे पहनती है कपड़े, अलग कपड़े पहनते हैं सो दैट पीपल कैन इजीली आइडेंटिफाई देम. सो क्लोथ्स हम लोग बहुत अलग अलग रीजन से पहनते हैं. So clothes, they protect our body from heat, cold, rain and insect bites, right? Now let us understand the different types of clothes. So the garments we wear are made from clothes. कोई भी जो हम कपड़ा पहनते हैं, भी टी-शर्ट, शॉर्ट्स, शर्ट्स, स्वेटर्स, राइट, ये सब किस चीज से बनी होती हैं? क्लॉथ से बनी होती हैं. Cloth is woven of threads and threads are spun of fibers, right? सबसे पहले हम क्या लेते हैं? We take fibers either from plants or animals. We take fibers, then fibers को spin किया जाता है, right? उनको spin करके, spun करके, then becomes the thread. So from fibers हम क्या करते हैं? उसको spin कर we get threads, right? Then these threads, they are woven, इनको weave किया जाता है, right? threads को weave करके हम क्या बनाते हैं? cloth, alright? और cloth को हम stitch करते हैं and हम अपने garments बनाते हैं, right? So firstly we obtain fibers. These fibers are spun to make threads. These threads are woven to make a cloth, and then the cloth is stitched to make the garments that we wear, right? So the fibers, ये जो हम fibers की बात कर रहे हैं, these are of two types, natural and synthetic. All right. So fibers obtained from living things are called natural fibers. Natural fibers कौन से होते हैं? जो हम living things जैसे plants हो गए, animals हो गए, इनसे obtain करते हैं, ये होते हैं हमारे natural fibers. For example, cotton. Cotton हम कहाँ से obtain करते हैं? Cotton fibers from the cotton plant. Then we have wool. Wool के fibers हम obtain करते हैं from the sheep. So the fibers obtained from living things are called natural fibers. Cotton, wool and silk, they are natural fibers, right? Cotton is obtained from the fibers of a cotton plant. Wool fiber is obtained from the hair of sheep, right? And silk, it is obtained from the cocoon of the silkworm. So all these which are obtained from the living beings, living things, they are known as natural fibers. And fibers that are made from non-living things are called synthetic fibers, right? Non-living things, right? They are made in the factories, right? They are made by humans. For example, we have nylon, terylene, polyester, right? All these are synthetic fibers. Now let's talk about cotton fibers in some more detail. The cotton plant has fruits और balls which burst open. So ये जो cotton plant है उसका जो fruit होता है, right? Fiber कहाँ से obtain होता है? Cotton plant का fruit होता है जो ball की तरह होता है, right? And that ball, it bursts open. वो
फूट जाती है, बाहर निकलती है उससे कॉटन, उसके अंदर कॉटन फाइबर्स होते हैं. The fluffy cotton is found inside these balls. This cotton is picked. It has thin fibers in it, right? So वो जो फ्रूट है वो फूटता है, जब वो बर्स्ट ओपन होता है उसके अंदर से कॉटन को पिक किया जाता है and that contains the cotton fibers, right? Next we have wool fibers. Sheep's fleece or hair is called wool. wool किसे कहा जाता है? जो sheep होती हैं उसके जो बाल होते हैं, right? sheep's fleece, उसके बालों को fleece भी कहा जाता है. The fleece is cut off or sheared, right? उसे काट दिया जाता है या फिर आजकल एक मशीन यूज की जाती है to shear the sheep, and that fleece has thin fibers in it, right? So उसको यूज किया जाता है to make wool threads, and that is woven to make the sweaters and all. So wool fibers, they are obtained from the sheep's hair or fleece. Next, let's talk about silk fibers. Silk fibers are made by an insect called silkworm, right? Silkworm एक insect है जिससे silk obtain की जाती है. So silk fibers are made by an insect known as silkworm. It lives on mulberry leaves. Mulberry tree की जो leaves होती हैं उसके ऊपर ये कीड़ा रहता है, insect रहता है जिसको हम silkworm कहते हैं. And it spins very thin silk fibers to make a cocoon, right? What is a cocoon? वो अपनी एक प्रोटेक्टिव केसिंग से, अपनी एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है सिल्क फाइबर्स से, राइट? उसको स्पिन करता है फाइबर्स को टू मेक अ प्रोटेक्टिव केसिंग अराउंड इट, एंड दैट केसिंग इज नोन एज कोकून. और वो बहुत फाइन सिल्क फाइबर से बनी होती है. द कोकून्स आर बॉइल्ड टू किल द वर्म्स. द फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द डेड कोकून्स. फिर क्या किया जाता है? ये जो कोकून्स हैं इनको बॉयल किया जाता है, अंदर जो इंसेक्ट होता है, सिल्कवर्म होता है, वो मर जाता है, एंड द फाइबर्स आर obtained, राइट? सो जो सिल्क है वो एक्चुअली इट इज मेड बाय किलिंग द सिल्कवर्म्स, राइट? नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ डू वी गेट द क्लॉथ. हमें जो कपड़ा है वो कैसे मिलता है? देयर आर वेरियस स्टेप्स ऑफ मेकिंग क्लॉथ व्हिच आर गिवन बिलो. फर्स्ट स्टेप इज स्पिनिंग, राइट? स्पिनिंग में क्या करते हैं? The fibers are twisted together or spun to make long threads. Okay, fibers होते हैं, छोटे छोटे रेशे हमें मिलते हैं कॉटन के, वूल के. क्या करते हैं हम? उनको ट्विस्ट करते हैं, स्पिन करते हैं एक दूसरे के साथ to make threads. Many women make threads with the spinning wheel. जो spinning wheel होता है उसकी मदद से भी ये threads बनाए जाते हैं स्पिन करके. काफी सारी women इस काम में employed हैं. The threads may be colored or dyed, और इन threads को color या फिर dye भी किया जाता है. So this is how threads are made. Threads are made by spinning or twisting the fibers with each other, right? Next step is weaving. अब हम इन threads को weave करके cloth बनाते हैं. The threads are woven together to make cloth. उनको इंटरवीव किया जाता है, राइट? थ्रेड्स को मिलाकर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली हम क्या करते हैं? उनको वीव करते हैं टू मेक द क्लॉथ. और ये वीविंग कहाँ की जाती है? द वीविंग इज डन ऑन अ मशीन कॉल्ड लूम. ओके, लूम कहा जाता है उन मशीन्स को जिन पर इन थ्रेड्स को वीव करके कपड़ा बनाया जाता है, क्लॉथ बनाया जाता है. द लूम में बी ऑपरेटेड बाय हैंड्स और बाय इलेक्ट्रिक पावर. ये जो लूम्स हैं ये इनको हाथों से भी ऑपरेट किया जा सकता है, हैंड ऑपरेटेड भी होते हैं, एंड दे आर इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड आल्सो. मेनी बिग लूम्स वर्क टुगेदर इन क्लॉथ मिल्स. जो मिल्स होती हैं, कपड़ों की जो मिल्स होती हैं, वहां पे बहुत सारी लूम्स लगी होती हैं जहां इनको वीव किया जाता है थ्रेड्स को क्लॉथ बनाने के लिए, राइट? सो देयर आर सो मेनी मिल्स इन सो मेनी looms installed in the cloth mills. They weave cloth, sarees and bed sheets. वहाँ पर sarees को weave किया जाता है, bed sheets को weave किया जाता है, या फिर normal जो cloth होता है उसको भी weave किया जाता है on the looms in the cloth mills, right? So now we have understood two steps. That is, firstly, fibers are spun to make threads, and then these threads
are woven. They are woven on the looms to make the cloth, right? What is the next step? Next step is dyeing and printing. उनको color करना, जो हमारे जो threads थे, जो हमने cloth prepare किया है, manufacture किया है, उसको हमें desired color में उसको dye करना, right? और उस पर अगर हम कुछ print चाहते हैं तो उसको print करते हैं. The cloth may be colored or dyed. It may also be printed with pretty patterns. जैसे भी आप patterns चाहते हैं उसके ऊपर वो patterns print किए जाते हैं, right? Sorry, let's read this important fact here. In Tamil Nadu, Coimbatore is the place with many cotton textile mills, right? Coimbatore में बहुत सारी cotton की textile mills हैं, right? Now, children, how are clothes change according to the seasons? Let's see that. We mostly wear cotton clothes in summer. जब गर्मियाँ होती हैं हम cotton clothes पहनते हैं, जिससे क्या होता है, वो clothes cotton clothes हमारा sweat absorb कर लेते हैं और हमें cool रखते हैं. They are airy. So these cotton clothes, they do not absorb heat. वो क्या absorb करते हैं? Sweat को absorb करते हैं. जो पसीना आता है हमें गर्मी के कारण, उसे absorb करते हैं और हमें cool रखते हैं. In winter, we wear woolen clothes with cotton, silk or synthetic dress, right? Right. So whatever dress we are wearing, whether it be a cotton dress, synthetic dress, silk dress, उसके साथ हम woolen clothes को पहन लेते हैं so that it keeps us warm. They do not let our body heat go out. हमारी body की जो heat है उसे trap करके रखते हैं. Woolen clothes उसको बाहर नहीं जाने देते. इससे क्या होता है? They keep us warm. And when it rains, we wear raincoats, right? जब बारिश होती है हम gumboots पहनते हैं, umbrellas use करते हैं, and हम पहनते क्या हैं? Raincoats पहन लेते हैं. And these raincoats, they are made of rubber cloth or plastic. ये rubber के या plastic के बने होते हैं जो पानी को पास नहीं होने देते अपने अंदर से. The water does not pass through them. इसकी वजह से क्या होता है? Our clothes, they do not get wet, right? So over our clothes, we wear these raincoats while it rains. All right. So these are how, according to the seasons, our clothing changes. This you see here is the cotton field. ये सब cotton plants हैं. This white you see is the cotton fruit जो burst open हो गया है. अब उसके अंदर से cotton को hand pick किया जा रहा है, right? तो फिर उसके fibers को spin किया जाएगा to make threads. Then these threads will be, yes, woven on the looms to make the cloth, and these cotton cloth that we'll obtain from this will be stitched to make some garments for us, right? So let's quickly connect, fill in the blanks. First one is silk is made from. So what is silk made from? It is made from silkworms. Number 2, wool is made from the dash of sheep and goats. Sheep and goats की जो fleece होती है या hair होता है. Fleece, or we can say hair of sheep and goats. Clear everyone? So I hope you have understood कि fibers से कैसे garments बनाए जाते हैं. The entire procedure, fiber से thread, thread से cloth, cloth से garment, right? So now let's begin with our exercise, children. A part, circle the correct word. Dash are spun of fibers. So fibers को spin करके what do we make? Yes, we made threads, right? Then number 2, terylene is a dash fiber. So terylene किस type का fiber है? Is it a natural or a synthetic fiber? Yes, this is a synthetic fiber. It is manufactured in the factories. Number 3, wool is obtained from dash sheep or silkworm. Where do we get the wool from? Yes, we get it from sheep. Number 4, machine used to weave cloth is called loom. जिस पे हम कपड़ा weave करते हैं उसे loom कहा जाता है.
And number 5, dash clothes keep us cool. So हम hot weather में किस type के कपड़े पहनते हैं? Cotton clothes. They keep us cool, right? Then we have the B part. Name the seasons in which we wear these clothes. ये कपड़े कौन से season में पहने जाते हैं? Firstly, what do you see in this picture? Yes, it is a raincoat and we wear it in the rainy season, or we can say monsoon. Right? Next, I can see a cotton t-shirt here and we wear it during summers. And here is a woolen sweater that we wear during winters. Winter season. Alright. Now let's see question number C. Answer the following questions. First part. What are natural fibers? Right? Natural fibers क्या होते हैं? Fibers obtained from living things, right? Fibers obtained from living things are natural fibers, right? Question number 2, what are synthetic fibers? So, similarly, same answer, fibers obtained from non-living things, right? Natural fibers are obtained from living things and synthetic fibers are obtained from non-living things. Clear, everyone? Now, question number 3, what is wool? Wool क्या होती है? It is the fleece or hair of the fleece or hair of sheep is called wool. Hope it's clear to everyone. Right. Next, let's see what do we have. A fun time activity for you. See, this is Mr. X in different seasons. Mr. X summer में, winter में और rains में क्या पहनते हैं? That we have to tell here. So, Mr. X should wear dash in summer. Summer में Mr. X को क्या पहनना चाहिए? Shirts, cotton shirts. B. Mr. X should wear dash in winter. Winter में क्या पहनना चाहिए? Jackets, woolen clothes, sweaters. So he should be wearing woolen clothes in winter. And Mr. X should wear dash in rains. He should wear raincoat. Clear, everyone? So, I hope you have understood this chapter well. This is Achal and I'll be meeting you with my next video on the next chapter. Till then, children, I hope you all stay happy and keep smiling. Bye, children. Have a good day.